Hello students. So today we will learn about our chapter 3, that is on more on Windows 7. So related that we discuss with some points which we had done in the chapter. So let's start. Our first question is related that which system folder temporarily stores our deleted files. वो कौन सा सिस्टम फोल्डर है जो हमारी डिलीटेड फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, मीन्स थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर करके रखता है हमारी डिलीटेड फाइल्स को. सो द आंसर इज द रिसाइकल बिन. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. रिसाइकल बिन इज a system folder that temporarily stores our deleted files. So our next question is, what is the purpose of a recycle bin? Recycle bin का काम क्या है, purpose क्या है? So in this we can restore deleted files or folders or delete them permanently. As you can see here, it is written permanently. Permanently means जैसे हमने कोई deleted files या folders को delete कर दिया, वो गई recycle bin में. रिसाइकल बिन में जाके आपने अगर परमानेंटली उस फाइल को डिलीट करना है, देन यू हैव टू परमानेंटली डिलीट इन दी रिसाइकल बिन. सो वो परमानेंटली हमारी जो फाइल है, हमारा फोल्डर है, दैट विल गॉट डिलीटेड इन दी रिसाइकल बिन. सो यू हैव टू गो टू रिसाइकल बिन टू डिलीट दैट फाइल और फोल्डर परमानेंटली, हमेशा के लिए. सो दोनों में डिफरेंस आई थिंक यू नो नाउ दैट टेम्परेरी फाइल्स, जो हमारी टेम्परेरी डिलीटेड फाइल्स होती हैं, वो जाती हैं इन दी रिसाइकल बिन. ठीक है, फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो रीस्टोर इट, एज वी कैन डिस्कस इट अबाउट लेटर. बट अगर हमने परमानेंटली डिलीट करनी है, देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिलीट दैट फाइल. यू हैव टू go to the recycle bin and delete that file, and it got permanently deleted from the system. Our next question is, how can you delete files permanently from the recycle bin? So first we have to open recycle bin, then right click on the item that you want to delete. Fine. On that file which you want to delete, you have to right click on it. Then third point, click the delete option in the confirmation dialog box. After you click on delete option, the confirmation dialog box will appear that say click yes. So you have to click on yes. So your item है that will got permanently deleted. After that question is, how can we recover deleted files? अब वो deleted files हमने recover करनी, like for example we want to again use that files. हमसे अगर बाई चांस डिलीट हो गई हैं वो फाइल्स, तो वी हैव टू रिकवर इट, मुझे दोबारा वो फाइल्स चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन यू हैव टू ओपन रिसाइकल बिन, राइट क्लिक ऑन द आइटम दैट यू वांट टू रीस्टोर, और शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स. रीस्टोर मीन्स वो मुझे दोबारा रीस्टोर करनी है, लाइक वी हैव टू अगेन यूज़ दोज फाइल्स. आई वॉन्ट द फाइल इन दैट लोकेशन ओनली, जहाँ पे मेरी पहले फ़ाइल वो पड़ी थी, मुझे वापस उसी जगह पे दोबारा चाहिए. So you have to right click on the item want to restore, shortcut menu appears, then click on restore option. So the item है that is moved back to its original location. Our next question is, how can you change the system date and time? So now we have to change the date and time option. So first is open the control panel, then you have to go to category view. We ensure that that category view is selected. So whenever you open your control panel window will appear, and on that category view is selected. वो category view selected जो हमने select करना है, what we have to select, clock, language and region category. Then under the date and time section, click set date and time option to set your date and time. Then our last question is, what is the purpose of control panel? Okay, what is control panel? ठीक है, so first of all you know this thing very well that control panel is a system folder.
So जो हमने settings करनी है, जैसे for example you set your phone settings, like you can change your date and time, you can set your alarm, you can change the calendar settings, ठीक है, date formats, time formats. So whatever we do in the phone settings, same it is in the according to the system settings. So control panel is a setting folder, like जिसको हम system folder कहते हैं, that allows you to make changes in the appearance and current settings of the window. ठीक है, जो भी हमने चेंजेस करनी है, जो भी हमने अपीयरेंस करनी लगानी है, वॉलपेपर्स हो गए, थीम्स लगानी है, वट एवर यू डू settings accordingly. So that is our system folder. So control panel is a system folder that allows you to make changes and current settings of the window. So students, go through it thoroughly and do learn these question answers. Thank you.